Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss different layouts of a manufacturing system. So, जिसको normally हम plant layouts कहते हैं. But before that, let me show you this figure from the Brewer book. This is basically a survey that was performed by Brewer by visiting more than 100 industries, and he basically research on the total time that is normally spent by the workpieces within the industry during a manufacturing run. So the upper line is the total time in a factory that a workpiece spent. And if you look into this survey, so what he concluded uh, from these factory data is that actually uh, the time that the workpiece spent within the factory, 95% of that time is idle time. Idle time ही होता है, 95% of the total time is spent in moving and waiting, and only 5% of the time is the actual machining time in which the workpiece is residing on the machine, any equipment, जो भी machine होगा, so 5% of the total time is the time on the machine that the workpiece spends, and 95% time is idle time. Idle time means या तो वो move कर रहा होता है या वो किसी machine का wait कर रहा होता है. And then further he analyzed that 5% time basically in that 70% of the time is loading and positioning of the workpieces, and only 30% of that 5% is the actual cutting time of the machine. So 5% को भी अगर आप देखें तो 70% जो है उसमें लोडिंग अनलोडिंग और जो टूल पोजिशनिंग है वो होती है. And the actual operation time is basically 30% of that 5%. So you can easily predict from this graph that if you want to increase the efficiency of a manufacturing system, or if you want to enhance the capability of a manufacturing system, so the window that can be targeted is the 95%. 5% में आप कुछ changes नहीं कर सकते because the machine parameters are set parameters. For example, if the cutting time is 2 minutes, so it will be 2 minutes. You cannot decrease that particular time, and if you want to decrease it, so you will be compromising some other factors of the product. Like for example, if you can increase basically that cutting time. For example, if I increase the feed rate, if I increase the depth of cut, but on the other hand, if you increase the cutting speed or if you increase the feed rate, so you will be decreasing the surface finish of the workpiece. If you increase the depth of cut, so the the work chattering will be more. Chatter means जो vibrations होती है in between the cutter and the revolving workpiece. So uh, it will basically affect the surface quality and the property of the workpieces. So you cannot basically distort the actual machine data. If the feed rate is, let us say, 5 millimeter per minute, so it will be 5 millimeter per minute. So the window that is available to you is the moving and waiting time, which is 95%, and you can easily cut some of the waiting times or the idle times from the system, and then you can enhance the
overall productivity rate of that system. So ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि नॉर्मली जो रिसर्चेज हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के रेफरेंस से, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की पैरामीटर्स बहुत से हैं in which most of the not most but almost 100% of the researches are targeting this particular span of time, which is the idle time, and they try to reduce the idle time so they can increase the manufacturing efficiency of the system. You know, so generally मैं इसको explain कर दूंगा. It is not in the course, but still they are part of the manufacturing system, so you must know these things. देखिए इंस्पेक्शन और टेस्टिंग का भी एक सेक्शन होता है फैक्ट्री में, तो यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज टू. और आपको पता होना चाहिए कि इंस्पेक्शन, नॉर्मली हम इंस्पेक्शन का नाम सुनते हैं. इंस्पेक्शन इज़ बेसिकली एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट फॉर सर्टन कंडीशंस के वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. एंड इफ़ the product passed those examinations, so then you say that the part is okay, otherwise it will be a defective part, और वो आप सिस्टम से जो है वो बाहर कर देंगे. So inspection जो है it is examination of the product and its components to determine whether they conform to the actual design specifications or not. ठीक है ना. So इसमें एक measuring आ जाती है, एक gauging आ जाती है. ठीक है ना, ये आपने पढ़े होंगे. सो इंस्पेक्शन फॉर वेरिएबल्स जब हम करते हैं तो इट इज़ बेसिकली मेजरिंग होती है. यानी जो वेरिएबल्स मीन्स जो डायमेंशंस हैं, जो अलाउंसेस हैं, जो टॉलरेंसेस हैं, वो आप देखते हैं. और एक आप एट्रीब्यूट्स देखते हैं. एट्रीब्यूट्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो पार्ट्स आपने जॉइन करने हैं और वो अपने अलाउंसेस में है या लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए आप गेजेस यूज़ करते हैं. ठीक है ना. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स के मेजरिंग जब आप करते हैं इंस्पेक्शन में, सो दैट इज़ फॉर वेरिएबल्स. और जो गेजिंग हम करते हैं वो बेसिकली हम पार्ट्स के एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ चेक्स करते हैं. टेस्टिंग में ज़ाहिर है आप सबको पता होगा कि यू सब्जेक्ट द प्रोडक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड यू ऑब्जर्व दैट आइदर द products are properly working or not within those conditions. So ये टेस्टिंग जो है ये सिमुलेशन भी हो सकती है, वर्चुअल टेस्ट भी हो सकते हैं, फिज़िकल टेस्ट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं. So that basically depends on the scenario के प्रोडक्ट जो है वो उसकी टाइप क्या है और वो किन कंडीशंस में ऑपरेट होगा. So normally you observe the product. It may be a part or material or sub-assembly during actual operation or under conditions that might occur during your operations. कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आ जाता है इसमें, जो प्रोसेसिंग और असेंबली ऑपरेशंस हैं, यानी प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल. मैनेजमेंट ऑफ प्लांट लेवल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, और प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ साथ जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को भी आपने देखना होता है. ठीक है ना. सो जो मिड टर्म से पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली प्लान्स आपकी बनती हैं. ठीक है ना. सो प्लान्स में या प्रोसेस प्लान में जो प्रोसेसेस की डिटेल्स होती हैं वो आपके पास होती हैं, और प्रोडक्शन प्लान में आप पूरा यानी जो आपका सिस्टम होता है, you make a plan to control all of the activities within a manufacturing setup. और उन एक्टिविटीज़ को जब आप देखते हैं तो प्रोसेस कंट्रोल के साथ साथ आपका फिर क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाता है. ठीक है ना. सो प्रोसेस प्लान की अगर आप बात करते हैं तो वो प्रोसेस कंट्रोल के रेफरेंस से ही होता है, लेकिन प्रोडक्शन प्लान की जब आप बात करते हैं तो प्रोडक्शन प्लान आल्सो कवर्स द
क्वालिटी कंट्रोल साइट, ठीक है ना। सो जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है वो भी देखा जाता है। सो ओवरऑल हमने यही पढ़ा था कि फैसिलिटीज़ क्या है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या होती है, एंड उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो आपने देखने होंगे। सो फैसिलिटीज़ जो है वो नॉर्मली दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सर्व द पर्टिकुलर मिशन ऑफ द प्लांट एंड डिपेंड्स ऑन द types of the products that will be manufactured, production quantity और product variety, ठीक है ना। सो ये दो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जब आप मॉडलिंग की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू कीप these two entities in mind, प्रोडक्शन क्वांटिटी और प्रोडक्शन वेराइटी। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है दैट इज़ इनवर्स रिलेशन। when you increase the product variety, so you will be decreasing the production quantity, you know। so जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने ये वेराइटीज़ और उसकी तरफ देखना होगा कि क्या गिवन होती है। प्रोडक्शन क्वांटिटी अगेन सिर्फ मैं आपको रिव्यू करा दूँ, नॉर्मली इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, और प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। और प्रोडक्शन क्वांटिटी को ही हम जो है इन तीन रेंजेस में करते हैं, जैसे आप जॉब शॉप मास या बैच प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था। लो प्रोडक्शन है, मीडियम और हाई प्रोडक्शन है, और वही रेंज है बुक्स में। ये 1 to 100 यूनिट्स पर ईयर अगर हो तो इट विल बी लो प्रोडक्शन, सिमिलरली 100 to 10,000 एंड अबाउट 10,000। प्रोडक्ट वैरायटी हमने डिस्कस किया था। तो प्रोडक्ट वैरायटीज आर बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय a setup. So it refers to the number of different product or part designs or types that will be produced in the plant. And as discussed so many times that there will be an inverse relationship between the production quantity and product variety. Product variety is more complicated than a number. प्रोडक्शन क्वांटिटी तो ठीक है, एक नंबर है, लेकिन प्रोडक्ट वेरिएशन की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमने फिर ये दो डिस्कस किया था, हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी और सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी। सो हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी in is that in which the products differ substantially. There will be few common components in an assembly. Soft product variety may there will be small differences between the products, and you will have many common components within an assembled product. And this is that graph which we discussed in the last video. Product variety vs प्रोडक्शन क्वांटिटी। सो क्वांटिटीज़ को जब आप वेराइटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो इनवर्स रिलेशन ही होता है, ठीक है ना। एंड दैट इनवर्स रिलेशन बेसिकली इज़ विद रेफरेंस टू दोज थ्री टाइप्स, लो प्रोडक्शन, मीडियम और हाई प्रोडक्शन, जिसे जॉब शॉप, बैच और मास प्रोडक्शन आप कहते हैं। जॉब शॉप पर हमने डिस्कस किया था, इट मेक्स लो क्वांटिटीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और सिंपली एक स्लाइड में जो है वो मैंने उसको समराइज़ करने की कोशिश की है। द ओनली थिंग दैट आई विल डिस्कस इन दिस ग्राफ इज़ द प्लांट लेआउट्स। मैंने आपको कहा था कि टुडेज़ लेक्चर इज़ विद रेफरेंस टू द प्लांट लेआउट। सो जॉब शॉप का वही सिनारियो है जो हमने, it includes production of components in which each and every product and component will be different from the previous one. Equipment जो है वो normally general purpose होता है। Plant layout जो है it can be fixed position layout और process layout, ये आप जहन में रखें। So these we will be discussing in the upcoming slides. So job shop scenario अगर है तो job shop में mostly it will be fixed position layout system और process layout. Fixed position layout system में यही होता है कि
normally, as I discussed so many times, that the the size of the products normally, in case of job shop production, is big, huge प्रोडक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल शिप इंडस्ट्रीज़ हैं या एरोप्लेन इंडस्ट्रीज़ हैं या और बहुत से प्लांट्स जो बनते हैं, जो पावर प्लांट्स हैं या जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं. तो इट इज़ a figure that shows the production of a ship. For example, एक ship assembly है. So normally ships या aeroplanes को अगर आप देखते हैं तो they do not move from one workstation to another workstation, जो कि normally एक factory में आपको नज़र आता है. If you have a product being processed, so normally that product moves from one cell to the next cell or from one workstation to the next workstations, and they are processed. But in case of workpieces that are larger in dimensions, that are heavy to move, so normally उसके लिए जो layout डिज़ाइन किया जाता है वो फिक्स पोजीशन लेआउट कहलाती है. ठीक है ना. So fixed position layout is that type of layout in which the product resides stationary at one place, and the equipments basically surrounds the product. जो वर्क स्टेशंस है they move around the product and the product remains stationary. सो प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह पे होता है, और जो इक्विपमेंट्स है जो वर्क स्टेशन है बेसिकली दोज वर्क स्टेशन विल मूव अराउंड द प्रोडक्ट. सो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज नोन एज फिक्स पोजीशन लेआउट. एरोप्लेन इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो फिक्स पोजीशन लेआउट होती है. ठीक है. सो द प्लेन बॉडी रिमेन्स एट इट्स पर्टिकुलर लोकेशन, और जो वर्क स्टेशंस है दे सराउंड्स द प्रोडक्ट एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स. Another is the process layout. So लो प्रोडक्शन या जॉब शॉप पे मैंने आपको कहा था कि फिक्स पोजीशन लेआउट हो सकती है या प्रोसेस लेआउट हो सकती है. फिक्स पोजीशन लेआउट इज़ विद रेफरेंस टू heavy parts, and process layout is with reference to small products. So for example, अगर small customized product कोई ऐसा है which is easily handled, which can be easily handled, so process layout can be adopted. And process layout is the normal layout that you see within the factory. If you have a manufacturing system which is comprising of cells, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेल्स है, सेल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यू विल हैव सिमिलर ग्रुप ऑफ मशीन्स ग्रुप टुगेदर, एंड ईच ग्रुप ऑफ मशीन इज नॉर्मली नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेल. सो व्हाट हैपेंस इन प्रोसेस लेआउट इज दैट you have a product, and basically that product moves from one cell to another cell. यानी अगर एक पार्ट पे फॉर एग्जांपल आपने मिलिंग का ऑपरेशन करना है तो वो मिलिंग सेक्शन में जाएगा. उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने टर्निंग का करना है, सो देन इट विल मूव ऑन टू द टर्निंग सेक्शन और मे बी टू सम अदर सेक्शन. सो basically the workpiece follows the sequence of the processes. ये आपने जहन में रखना होगा कि in process layout the work basically will follow the sequence of the processes. यानी आपका प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में होता है. प्रोसेस मीन्स यानी जो इक्विपमेंट्स है दे आर इंस्टॉल्ड इन सम स्पेसिफिक सीक्वेंस, and the workpiece has to follow that particular sequence. So this type of layout in which you have similar group of machines grouped together is known as process layout. फिर आपका बैच प्रोडक्शन आ जाता है और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है.
ठीक है ना। तो उनके रेफरेंस से अगर आप देखते हैं तो बैच प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बैच प्रोडक्शन में जो टिपिकल लेआउट आपको मिलता है दैट इज़ प्रोसेस लेआउट, ठीक है ना। और जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सेलुलर लेआउट होती है। बैच प्रोडक्शन और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में यही डिफरेंस है कि बैच प्रोडक्शन जो है individual batches will be produced individually. One batch will be produced, then the company will switch to another batch. And if simultaneously two or three batches are manufactured within the same time, simultaneous production हो रही है, तो उसको फिर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। सो बैच प्रोडक्शन में जो नॉर्मल टिपिकल प्रोडक्शन होती है in which one batch individual batch will be produced and afterward some other batch will be manufactured. So the type of layout that is used for a normal batch type of setup is the process layout. और अगर cellular manufacturing हो, cellular manufacturing means if multiple batches are produced simultaneously, so the type of layout which is used or adopted by the factory is cellular layout. So ये cellular layout है in which you will have uh, equipments arranged in the same manner as that of the process layout. यानी process layout की तरह ही आपके पास group of machines different, these colors basically shows different types of classes means processes. तो अगर for example ये drilling है तो this will be turning or milling or some other, ठीक है ना, and they represent basically the whole group, ठीक है ना. So you will have again manufacturing cells and simultaneously uh, multiple batch parts will be produced in each cell, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है तो उसमें अगर एक पार्ट बन रहा है सो मे बी दैट विल बी फ्रॉम बैच नंबर वन and another part will be which will be processed on some other machine that will be from batch number 2 or batch number 3. So simultaneous production के लिए when random parts move through the uh, manufacturing cells, so that is known as cellular layout. So cellular layout जो है वही process layout ही होता है, लेकिन instead of similar parts simultaneously different parts will be machined on different machines within that particular cell. फिर मास प्रोडक्शन होती है. सो मास प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो सिनेरियोज हो सकती हैं, क्वांटिटी प्रोडक्शन और फ्लो लाइन प्रोडक्शन, है ना. तो क्वांटिटी प्रोडक्शन में इक्विपमेंट you will have a single equipment and that equipment will be a dedicated equipment and it will be dedicated to manufacture one type of product. Standard machines and toolings are used, for example जो स्टेपिंग presses है या जो molding machines etc है. इसका जो typical layout है वो भी process layout ही होता है, because the work piece will follow the sequence of the equipment and you have only one equipment और आपका वर्क पीस जो है वही इक्विपमेंट का जो प्रोसेस है वही फॉलो करता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रोसेस लेआउट. और फ्लो लाइन लेआउट होती है मास प्रोडक्शन में, जो कि जनरली आप देखते हैं एक मास सेटअप में यू इन विच यू विल हैव मल्टीपल वर्क स्टेशंस एंड द प्रोडक्ट विल मूव through those workstations. It will be processed and then finally you get the final product or assembly. So you have multiple workstations that are arranged in sequence and product requires multiple processing or assembly steps. इसका जो layout है मास प्रोडक्शन में या फ्लो लाइन प्रोडक्शन में उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट. You know, so product layout is the most common which is used in the production of
मास क्वांटिटीज। प्रोडक्ट लेआउट में ये होता है कि यू बेसिकली द इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड according to the sequence of operations. So it is opposite of the process layout. Process layout में जो जो वर्क पीस है it follows the sequence of the processes, and in case of product layout the machine basically follows the sequence of the work piece ऑपरेशंस। सो वर्क पीस पे जो ऑपरेशंस आपने करने होंगे, चाहे वो असेंबली ऑपरेशंस हो या प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो, नॉर्मली जो मशीन्स है दे आर अरेंज्ड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। So the sequence of processes, the sequence of work piece basically uh, is the guiding line. And in case of process layout, the sequence of machines is the guiding line. So this is the only difference between the two. So product layout में machine जो है it follows the sequence of the work piece. In process layout uh, the work piece follows the sequence of the machine. है ना। सो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट में यही होता है कि प्रोसेस लेआउट में यू विल हैव सिमिलर ग्रुप ऑफ मशीन्स। फॉर एग्जांपल मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, एंड द वर्क पीस विल बेसिकली फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। यू नो, सो मशीन्स विल बी परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस एंड दे आर नॉर्मली ग्रुप्ड एट वन लोकेशन, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेल कहते हैं। एज फार एज द प्रोडक्ट लेआउट इज कंसर्न, सो मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी जो वर्क पीस के पे जो ऑपरेशन का सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस में आपके मशीन्स जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है ना। सो यू विल नॉट फाउंड लाइक manufacturing cells. You know, you will there will be individual machines that will be arranged in some particular sequence. So अगर for example एक turning machine है तो दूसरा हो सकता है milling हो या drilling हो, whatever is the sequence of operation, so that will be the sequence of the equipment. ठीक है ना। So this is product layout। और product layout जो है normally आपको mass production में मिलती है, और process layout जो है वो आपको batch type of production में या जो जॉब शॉप सिनारियो है उसमें आपको मिलेगा। सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट लेआउट एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। सो प्रोडक्शन क्वांटिटी को अगर आप देखते हैं और प्रोडक्ट वैरायटी को अगर आप देखते हैं तो वही ग्राफ है जो हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ आर डिनोटेड बाय क्यू, वेराइटीज़ को हम पी पे डिनोट करते हैं, और इनके बीच में अगर जब आप डिवाइडिंग लाइंस ड्रा करते हैं तो व्हेन यू इंक्रीज द वेराइटीज़ तो वो जॉब शॉप की तरफ आप जा रहे हैं, फिर आपका बैच प्रोडक्शन या सेलुलर जो मैंने आपको बताया, और यू कैन हैव मास प्रोडक्शन, और मास प्रोडक्शन में फिर क्वांटिटी और फ्लो लाइन प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। सो एज फॉर एज द लेआउट्स आर कंसर्न, सो इसी ग्राफ पे जो है शो की गई है कि जॉब शॉप जो है वो फिक्स पोजीशन लेआउट नॉर्मली आपको मिलेगा। प्रोसेस लेआउट भी हो सकता है if the size of the work pieces and the weights of the work pieces are smaller। बैच प्रोडक्शन या सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की जब आप बात करते हैं, बैच प्रोडक्शन मींस इंडिविजुअल बैचेस, और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मींस मिक्स ऑफ बैचेस, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल बैचेस। तो इसमें प्रोसेस लेआउट भी हो सकता है और सेलुलर लेआउट भी हो सकता है। मास प्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं तो या तो प्रोडक्ट लेआउट होगा, और अगर क्वांटिटी प्रोडक्शन है सो क्वांटिटी प्रोडक्शन में एक ही मशीन होती है। सो ज़ाहिर है कि फिर वर्क पीस को ही उस मशीन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होता है। सो दैट इज़ वाई वो प्रोसेस लेआउट आपका बन जाएगा। बट मोस्टली जो सिस्टम्स होते हैं मास प्रोडक्शन में उसमें प्रोडक्ट लेआउट ही आपके पास होती है। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन की जो रिलेशनशिप्स है उनको अगर आप देखते हैं तो एज आई सेड ये जो क्वांटिटीज़ हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो वेराइटीज़ हैं उसको हम पी से डिनोट करते हैं। सो नॉर्मली जब आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स की बात करते हैं
तो वो आप फिर Q से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव मल्टीपल बैचेस, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वेराइटीज़ है, तो वेराइटीज़ में फिर अगर वेराइटीज़ मीन्स अगर आपके पास बैचेस है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फिर आपने सम अप करने होंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल दो बैचेस हैं, तो बैच नंबर 1 के जितने पार्ट्स आपने बनाए हैं और बैच नंबर 2 के जितने पार्ट्स आपने बनाए हैं, वो आप जो है सम अप करेंगे, एंड देन फाइनली यू विल गेट सम फाइनल नंबर कि ये टोटल प्रोडक्शन है एक प्लांट की। So the total number of product units that will be produced by a company is denoted by Q with the prefix F. So Q F means Q final. यानी जो final production होगी, that will be basically summation of all the batches, product types, ठीक है ना। सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q with a prefix J, ठीक है ना। सो क्यू जे जो है वो बेसिकली एनुअल क्वांटिटी ऑफ वेराइटी जे है। वेराइटी मींस बैच। और पी जो है दैट इज़ वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 to J। तो समेशन में अगर आप क्यू जे लिखते हैं, सो जे विल बी फ्रॉम 1 to P। पी मतलब यानी जितने आपके पास वेराइटीज़ होंगी या बैचेस होंगे। सो इफ़ पी इज़ इक्वल टू 3, दिस मीन्स दैट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका बन जाएगा जे विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 to 3, एंड क्यू एफ आपका फिर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q1 यानी फर्स्ट बैच के जितने पार्ट्स हैं, वो फिर सेकंड बैच के और थर्ड बैच के, तो तीनों की तीनों का जब आप सम अप लेंगे, सो इट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन के एक सिस्टम में आपने कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर लिए हैं। सो दिस इज़ अ जनरल फार्मूलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी फाइंड आउट। ये भी आप जहन में रखें कि ज़्यादातर जो फार्मूलेशन है वो आप ख़ुद बनाएंगे। यानी प्रोडक्शन में बहुत कम आपको जो स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं वो आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द फार्मूलेशन और मैथमेटिकल मॉडलिंग विल बी डिज़ाइंड बाय यू। इक्वेशन आपने ही या एक फार्मूला जो है वो आपने ही डेवलप करना होगा, एंड दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन डेटा। यानी क्वेश्चन में जो डेटा होगा उसकी बेसिस पे फिर आप फार्मूलेशन करेंगे कि क्या आपका डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो हो सकता है। दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग videos. So as far as the total number of units, the product units are concerned, so QF पे हम डिनोट करते हैं, एंड इफ़ देयर आर वेराइटीज़, अगर बैचेस हैं, सो QF विल, अगर फॉर एग्जांपल मास प्रोडक्शन है तो वो तो एक फिक्स्ड फिगर होगी, यानी दैट विल बी सिंपल Q और QF। if you have varieties or batches, so then the final QF will be basically summation of all those QJs, ठीक है ना। और जे मैंने आपको बता दिया है कि इट कैन बी फ्रॉम J1 to P, P जितने भी वेराइटीज़ आपके पास होंगी। सो प्रोडक्ट वेराइटी वही चीज़ है, यानी जो हार्ड प्रोडक्ट वेराइटी हम कहते हैं और सॉफ्ट प्रोडक्ट वेराइटी कहते हैं, ठीक है ना। सो हार्ड प्रोडक्ट वेराइटी इज़ बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स, एंड सॉफ्ट प्रोडक्ट वेराइटी इज़ डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडल्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। फिर आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट एंड पार्ट कम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। सो ये सिंपल सिनेरियो होता है, बाज़ औक़ात आपने नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी फाइंड करने होंगे, या नंबर ऑफ़ पार्ट्स विद इन द प्रोडक्ट अगर आपने फाइंड करने हो, तो वो कैसे आप करेंगे, उसको प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी या पार्ट कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। So product complexity is denoted by n with a prefix p, और जो part complexity है it is n with a prefix o. Product complexity, as the name implies, it will be the total number of parts within that product.
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी क्या है, सो प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी बेसिकली कि एक प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए आपको कितने कंपोनेंट्स की सब पार्ट्स की ज़रूरत होगी. सो द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट विल बी present in a full-fledged assembled product will denote the NP. NP means the product complexity. और फिर पार्ट कम्प्लेक्सिटी जो है, यानी जो इंडिविजुअल पार्ट्स आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट में, तो ज़ाहिर है वो पार्ट जो है वो आपने किसी मशीन पे बनाना होगा या नंबर ऑफ मशीन्स पे आपने बनाना होगा, एंड दैट विल बी मेड थ्रू सम ऑपरेशंस, यू नो. So that total number of operations that will be performed on one specific part is referred as part complexity. उसको हम NO कहते हैं, ठीक है. तो ये दो आपने जहन में रखनी होगी, product complexity, part complexity. Product complexity is the total number of parts within the product, and part complexity is the total number of operations on one individual part. सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं, P इस प्रोडक्ट वैरायटी, Q जो है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी है आपकी या प्रोडक्ट क्वांटिटी है, NP इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स एंड NO इज़ नंबर ऑफ ऑपरेशंस. सो total number of products that will be produced within the company, as I said that it is denoted by QF, ठीक है ना. और अगर आपके पास बैचेस हैं तो फिर हम QF की समेशन लेते हैं. सो सिंपल सिनारियो में अगर आप लें, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट वेराइटी, यानी जितनी वेराइटी है, एंड देन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यू नो. सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू द बैचेस विल गिव यू द फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. अब अगर आप पार्ट कम्प्लेक्सिटी और जो प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी है उसकी तरफ जाते हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड विल बी, पार्ट्स को हम डिनोट करते हैं NP से. तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं मल्टीप्लाइडेड बाय द वेराइटी, कि कितनी वेराइटी है, और उनको सिंपली आप पार्ट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. और फिर इसी तरह अगर आप ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस फैक्टर विद द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन ईच पार्ट. तो आपके पास यानी वेराइटी इनटू क्वांटिटीज़ इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, और हर एक पार्ट पे जो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए हैं इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशंस. सो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ द ऑपरेशंस. तो ये सिंपल सिनारियो है. तो इसी तरीके से जो फार्मूलेशन है वो आप खुद बनाएंगे अक्सर प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना. सो और बेसिकली ये पार्ट कम्प्लेक्सिटी और प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी ही वो पैरामीटर्स हैं जो कि एक फैक्ट्री का सेटअप आपको आइडेंटिफाई करके देती है कि what type of facility is this with reference to the part and product complexity. So effect of number of parts and number of operations को अगर आप देखें तो this horizontal line basically shows you the number of parts, or it represents the number of operations, this vertical line जो है. So number of operations and number of parts. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ पार्ट्स जो है इफ़ इट इज़ 1 एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट पार्ट इज़ इक्वल टू 1, सो व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी इट विल बी. सो अगर नंबर ऑफ पार्ट 1 है और नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो 1 है, सो इट विल बी अ हैंडीक्राफ्ट शॉप. इट इज़ नॉट बेसिकली अ प्रोडक्शन प्लांट, और जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं, यू नो. इट इज़ अ हैंडीक्राफ्ट शॉप. एक पार्ट है और उसके ऊपर कोई वर्कर जो है वो एक ऑपरेशन कर रहा है, यू नो. सो दैट इज़ अ हैंडीक्राफ्ट शॉप. इफ लेट अस से द नंबर ऑफ parts is equal to 1, if there is only one part
and you have multiple operation on that part, if number of operations is greater than one, ठीक है ना. So ये आपका ब्लॉक आ रहा है, ठीक है ना. So here NP यानी number of part is equal to one and number of operation is greater than one. This means that they are part producers. वो कंपनी जो है वो पार्ट प्रोड्यूस कर रही है. सो दिस प्लांट मेक्स पार्ट्स एंड ईच रिक्वायर मल्टीपल ऑपरेशंस. देयर इज़ नो असेंबली ऑपरेशन, ठीक है ना. कोई असेंबली ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ ऑपरेशंस है आपके पास. नंबर ऑफ ऑपरेशन इज़ ग्रेटर देन वन और नंबर ऑफ पार्ट जो है वो एक है, तो पार्ट प्रोड्यूसर. कमिंग टू दिस वन, फॉर एग्जांपल इफ नंबर ऑफ parts is greater than one and number of operation on each part is equal to one. अगर आपके पास मल्टीपल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, सो इट इज़ एन असेंबली प्लांट. असेंबली प्लांट में यही होता है कि नॉर्मली आपके पास सब असेंबलीज होती हैं और हर एक स्टेशन पे आपका आपका आपकी एक सब असेंबली जो है वो असेंबल कर दी जाती है बेसिक फ्रेम के साथ. सो दिस इज़ बेसिकली एन असेंबली प्लांट और उसमें कोई पार्ट जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना. सो इफ नंबर ऑफ पार्ट्स is greater than one and number of operation on each part is equal to one, so that will be definitely an assembly plant. और वो किस किस्म की assembly plant होगी? It will be an assembly plant in which all of the all of the parts will come from some other vendor, you know. So there are so this means that this will be a plant which will purchase all the parts and will then assemble them into the final product. So one operation per part आपके पास है. And if you have, let us say, a setup in which the number of parts is greater than one, इसमें अगर आप देखिए, so number of part, if it is greater than one and number of operation on each part is also greater than one, so ये एक vertically integrated plant है which is producing parts, which are making parts and then also assembling those parts. जिस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज टोयोटा को अगर आप देखें तो वो पार्ट्स बनाती भी है और फाइनली उसको फिर असेंबल भी करती है. सो दिस इज़ हाउ द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस, या आप in other words you can say that part complexity and product complexity defines the type of setup that you will be working in. So सेटअप जो है वो यही हो सकते हैं, या तो हैंडीक्राफ्ट शॉप होगा या पार्ट प्रोड्यूसर कंपनी होगी या एक सिंपली असेंबली प्लांट होगा या इंटीग्रेटेड प्लांट होगा. कैपेबिलिटीज़ जो है उसमें यही आ जाती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं, सो दिस इज़ बेसिकली द टेक्निकल एंड फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के लिए यही 3 डायमेंशंस हैं जो कि नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं. एक तो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी, द अवेलेबल सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. अवेलेबल सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मींस द अवेलेबल सेट ऑफ द इक्विपमेंट्स. कौन सा इक्विपमेंट है और उसकी क्या कैपेबिलिटी है. सेकंड इज़ द फिजिकल साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट. ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, यानी किस टाइप का इक्विपमेंट है और किस टाइप का वर्क पीस जो है वो हैंडल कर सकता है, यानी किस डायमेंशन तक वो हैंडल कर सकता है. एंड थर्ड इज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसको आप प्लांट कैपेसिटी भी कहते हैं, कि कैपेसिटी क्या है सिस्टम की, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एनुअली. So this is a solved example from the Brewer book. एक long statement है. This is for you. Just go through them. और जो simple formulation मैंने आपको बताई थी कि part complexity अगर आप find करना चाहते हैं या जो number of operations है वो find करना चाहते हैं या product में जो total number of parts है वो आप find करना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट है. एंड अकॉर्डिंगली जब आप इस फार्मूला में आप इसको एंटर करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट.
प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, साइकिल टाइम्स होगा, प्रोडक्शन रेट होगा, अवेलेबिलिटी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी हम देखते हैं, यूटिलाइजेशन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम और वर्क इन प्रोसेस. So these are the parameters that we will be discussing in the numericals. ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है ना. साइकिल टाइम को अगर आप देखें तो नॉर्मली साइकिल टाइम में आपका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम भी आ जाता है, यानी इसको ऑपरेशन टाइम कहते हैं. इसमें हैंडलिंग टाइम भी आ जाता है और इसमें टूल हैंडलिंग टाइम भी आ जाता है, ठीक है ना. सो अगर एक मशीन का साइकिल टाइम आपने नोट करना हो तो दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. तो अगर स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल हैंडलिंग टाइम गिवन है या टूल हैंडलिंग टाइम गिवन है, तो देन यू विल एड इट विद द एक्चुअल मशीनिंग टाइम. तो एक तो एक्चुअल जो मशीन का अपना टाइम होगा, यानी जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, दैट विल बी गिवन. यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट प्रोसेसिंग टाइम है, so that will be TO. TO means processing time of the operation. TH is the handling time and TH is the tool handling time. So वर्क पीस हैंडलिंग टाइम है और टूल हैंडलिंग, यानी बाज़ औक़ात वर्क पीस को आपने लोड करना होगा, अनलोड करना होगा, इट विल टेक टाइम. टूल चेंजेस, जब टेरेट में आप टूल चेंज करते हैं तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना. सो दोज टाइम्स विल बी एडेड विद द प्रोसेसिंग टाइम. तो उसके बाद जब आप इसका सम अप लेंगे तो यू विल गेट द होल साइकिल टाइम के साइकिल टाइम क्या है एक मशीन का. सो ये डिफरेंट सिनारियोज हैं. जस्ट गो थ्रू दीज पैरामीटर्स. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एक थ्योरी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे स्टोरेज बफर्स कहते हैं. सो बिफोर दैट साइकिल टाइम जब आप फाइंड करते हैं या और पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं तो उससे पहले बफरिंग भी होती है, ठीक है ना. सो वो बफर स्पेस प्रोवाइड करना, वो किस तरह हम करेंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट. सो इसमें अगेन ये यहाँ से बल्कि आप जो साइकिल टाइम मैंने आपको बताया 158 स्लाइड से लेके ये सिंपल फार्मूलाज हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि कोर्स में नहीं है, लेकिन आपका जानना ज़रूरी है. तो प्रोडक्शन रेट्स के रेफरेंस से है अप टू दिस एग्जांपल, ठीक है ना. सो दिस इज़ स्लाइड नंबर 195, ठीक है ना. सो 195 तक जो ये स्लाइड्स है तकरीबन 40-50 स्लाइड्स हैं. सो दीज आर रेफरेंस स्लाइड्स, जस्ट गो थ्रू दैम सो यू विल गेट सम आइडिया. और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू पिक अप क्विकली, ठीक है ना. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी.